Today I have to do February March 2024 paper 4 variant 2. ठीक है February March 2024 paper 4 variant 2. Let's further move ahead. आगे बढ़ते हैं. ये पेपर सारा निकाल लो बेटा. That will really help you a lot. चल. So first of all in A2 का paper you have some constant values. Then you have your first question. One second. Sir, is this? Yeah. ठीक है. Explain why the gravitational potential near to a mass is negative. Beta, why is gravitational potential near a mass negative? This is a regular question. This gets repeated every year for 2 to 3 marks. So I am telling you answer. बेटा मैं यहाँ पे एक आंसर लिखवा रहा हूँ जो लिख लोगे तो 2 से 3 मार्क्स तो आपके कहीं अस्सलाम नहीं वालेकुम गए. सर। क्या कह रहे हो? हेलो हेलो हेलो. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम. सर अच्छा. ये ईयरली है? जी जी बेटा ये एलडी है. ये फेब्रवरी कौन मार्च से? 2024 पेपर 4 वेरिएंट 2. बेटा ये हमेशा क्वेश्चन आता है 2 से 3 मार्क्स का. यू हैव टू टेल व्हाई द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नियर टू अ पॉइंट मास इज नेगेटिव. सो व्हाट विल यू से यू विल से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट infinity at infinity is 0. This will get you the first mark. Gravitation potential at infinity is 0. What will be your second mark? बेटा second mark किस पे lie करेगा? You will say gravitational forces are attractive. You will say gravitational forces are attractive. Gravitational forces are attractive. Gravitational forces are attractive. बेटा थर्ड पॉइंट. अच्छा देखो यहाँ पे तो ये 2 मार्क्स का सवाल है. ऑल दो ये 2 मार्क्स का सवाल है आई एम गिविंग यू एन 3 मार्कर आंसर. सो यहाँ पे थर्ड पॉइंट आप क्या लिखोगे? थर्ड पॉइंट व्हाट विल यू राइट एज योर थर्ड पॉइंट? यू विल से दैट वर्क इज डन ऑन अ मास टू मूव इट अवे फ्रॉम एन अदर मास. बेटा ग्रेविटेशनल फोर्सेस अट्रैक्टिव होती हैं. सो अगर आप एक मास दूर ले जाना चाह रहे हो सो वर्क मस्ट बी डन ऑन दैट मास. योर लास्ट पॉइंट विल बी वर्क must be done must be done on a mass to move it away from an other mass. Work must be done on a mass to move it away from another mass. Simple as that. Perfect. कोई सर ये थर्ड पॉइंट समझा दें. बेटा देखो देखो अब थर्ड पॉइंट समझा देता हूँ मैं. लेकिन जिसको ये लॉजिकली नहीं समझ आए उसको लॉजिक में घुसने की ज़रूरत नहीं है. पेपर निकालना अभी हमारा मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट है. लेकिन मैं समझा देता हूँ. लेट्स से दिस इज योर अर्थ. ठीक है लेट्स से दिस इज योर अर्थ. लेट्स से दिस इज अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स. बेटा अर्थ जो है एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है. आई होप ऑल ऑफ यू नो बाय नाउ दैट द फोर्स दैट अर्थ अप्लाइज इज एन अट्रैक्टिव फोर्स. इनवर्ड फोर्स. If the box moves towards the earth, if the box move towards the earth, can you realize force and displacement are both in the same direction? Hence, work done, yeah, gravitational potential will be positive. But beta, ऐसा नहीं होता. Gravitational potential is what? Gravitational potential is the force or the work done in moving a unit mass away from the planet. Can you realize force or distance अलग अलग direction में. Hence work done या फिर gravitational potential will be negative. Simple as that. जिसको logically समझना था logically भी समझना. बेटा February March paper 2 sorry February March paper 4 variant 2. ये लिखा हुआ है यार. February March paper 4 variant 2. Let's further move ahead. ठीक है. A planet may be assumed to be a uniform sphere. Perfect. It
has a gravitational potential phi at a distance r from the center of the planet. Perfect. The variation with 1 over r of gravitational potential is shown in figure 1.1. Take care. Phi versus 1 over r की variation is shown in this graph. Perfect. Let's further move ahead. You have to show that the mass of the planet is this. We have to show that the mass of the planet is this. बेटा आप थोड़ा सा गौर और फिक्र करेंगे. अबे यार, वेरी, ये मोमेंट ने यार बहुत ही सही बात की है. बहुत ही सही बात की है. अच्छा, इस पे मैं आता हूँ. फाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू नेगेटिव कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर. ठीक है बेटा, अगर आप गौर करो तो आपने वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट किया है. इफ यू फोकस अ बिट, आपने वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट किया है. फाई. एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट किया है. 1 ओवर आर. सो लेट्स रीअरेंज दिस इक्वेशन. फाई इज इक्वल्स टू -1 ओवर आर कैपिटल जी कैपिटल एम. इसको हम इस तरह रख देते हैं. लेट्स कीप इट लाइक दिस. नेगेटिव कैपिटल जी कैपिटल एम 1 ओवर आर. Perfect. Now, if you compare it to the equation of a line, if you compare it to the equation of a line, phi is plotted on the y-axis, 1 over r is plotted on the x-axis. बेटा ये चीज क्या है. What is negative capital G capital M? This is basically the gradient of the graph. This is basically the gradient of the graph. क्या आप ग्राफ का ग्रेडियंट निकाल सकते हो. क्या आप ग्राफ का ग्रेडियंट निकाल सकते हो. जी बिल्कुल निकाल सकते हो. दो पॉइंट ले लो ग्राफ पे, दो पॉइंट्स ले लो ग्राफ पे. यू कैन टेक दिस एज योर फर्स्ट पॉइंट 0,0. अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या करना है. सेकंड पॉइंट मैक्सिमम अवे लेना है. मैक्सिमम अवे फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट लेना है. तो मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ. दिस सीम्स रीजनेबल. अच्छा, अब इसकी वैल्यूज एक्स एक्सिस में तो इजीली हो जाएंगी. 4. वाई एक्सिस में क्या वैल्यू है बेटा. वाई एक्सिस में ये बॉक्स है, ये मिडिल वाला बॉक्स है. लेट मी जूम इन अ बिट. अब ये कैसे निकालेंगे, ये भी एक चैलेंज है. सुन लो, गौर कर लो, आराम से देख लो क्या होता है. सो इफ यू सी, you are going from -2 to -2.4. Basically, you are covering 0.4 units in how many boxes? In 10 boxes. So, beta, how many units will you cover in one box? How many units will you cover in one box? 0.04. What will this come out to be? This will be 2.36. और ये मिडल वैल्यू क्या हो जाएगी. दिस मिडल वैल्यू विल बी 2.34. सिंपल. या अगर यहाँ पे भी ये चीज नहीं समझ आई तो बेटा, कैन यू रियलाइज दैट दिस मिडल वैल्यू विल बी 2.2. दिस इज 2.24. This is 2.28. This is 2.32. Then this is 2.36. 2.36 and 2.32 के बीच में मिडिल वैल्यू क्या होगी बेटा. This box, this box is 2.36. This box is 2.34. What will be the middle value here? The middle value, sorry, this is 2.32. नीचे वाला is 2.36. What will be the middle value? 2.34. This black वाली value और the middle value is 2.34. Perfect. इसको लिख देते हैं भाई. यहाँ पे लिख दो इसको. आप बिल्कुल ही जाहिलों वाला काम करना. ठीक है, आप सिर्फ ग्रेडियंट निकाल देना. आप सिर्फ ग्रेडियंट निकाल देना और समझना कि तुम लोग ग्रेड 8 में हो. सिर्फ ग्रेडियंट निकाल के बैठ जाना 2 पॉइंट्स. नहीं बेटा, ग्रेडियंट निकालते वक्त हमेशा 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 एक्सेस इसके यूनिट्स करने हैं. ठीक है बेटा, हर जगह आ सकते हैं क्वेश्चन. एग्जामिनर का अपना मूड है. हमेशा याद रखना है ग्रेडियंट पे आपने यूनिट्स इंक्लूड करने हैं. अब 2 पॉइंट्स आ गए आपके पास. परफेक्ट, आ गए सर. एक 0,0 है, एक है 4,2.34. अब ग्रेडियंट निकाल लेते हैं. y2 - y1, 2.34 -0. x2 क्या है, 4 - 0. अब अगर जो बच्चा सिर्फ ये करता है और एक्सपेक्ट करता है उसको फुल मार्क्स मिलेंगे, वो बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशन है उसकी. आपने बेटा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के यूनिट भी इंक्लूड करने हैं. वाई एक्सिस पे क्या है, 10⁸8. तो यहाँ पे 10⁸8 इंक्लूड कर दो. एक्स एक्सिस पे क्या है भाई. एक्स एक्सिस पे क्या है, यू हैव 10⁻⁻8. निकालो जरा ग्रेडियंट क्या आता है. शाबाश, शाबाश, निकालो जरा ग्रेडियंट क्या आता है.
This comes out to be, gradient comes out to be 0.585 into 10 raised to the power of 16. This comes out to be your gradient. Simple as that. ये आपका gradient आ गया. ठीक है. अब gradient किसके इक्वल था बेटा? Gradient किसके इक्वल था? ग्रेडियंट किसके इक्वल था? इफ यू रियलाइज, अगर आप रियलाइज, अच्छा हमने यहाँ पे एक और गलती की है वैसे. नो बडी नोटिस्ड एंड आई एम सरप्राइज बाई नो बडी नोटिस. बेटा ये नेगेटिव है. ये -2.34 है. दिस इज -2.34. तो ये पूरा ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? माइनस. एंड दिस मेक्स सेंस एज वेल. बेटा ग्रेडियंट आपका नेगेटिव हो जाएगा. दिस मेक्स सेंस एज वेल. कंप्लीट सेंस है इस बात की. वाई? बिकॉज द लाइन इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन. द लाइन इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन. ये आपका ग्रेडियंट आ गया. परफेक्ट. अब इस ग्रेडियंट को इक्वेट करते हैं कैपिटल जी कैपिटल एम से. चलो. -0.585 into 10 raised to the power of 16 is equals to negative capital G capital M. Negative, negative cancel out. You had to calculate the mass of the planet. You had to calculate capital M. How will you do that? 0.585 into 10 raised to the power of 16. कैपिटल जी की क्या वैल्यू होती है? जीनियस इज 6.67 into 10 raised to the power of -11 is your mass. अच्छा, अगर कोई गॉड फॉरबिड वैल्यू भूल जाता है कैपिटल जी की, वैसा ऐसा होना नहीं चाहिए एग्जामिनेशन में, बट अगर भूल जाते हो बेटा, यहाँ पे लिखी हुई होती है डेटा टेबल में. 6.67 into 10 raised to the power of -11. ठीक है. अगर कोई वैल्यू भूल जाओ तो हमेशा डेटा टेबल को सर्च कर लेना. मे बी यू विल फाइंड इट हेल्पफुल. अच्छा, मास की वैल्यू क्या आ जाती है? मास की वैल्यू कम्स आउट टू बी 8.8 into 10 raised to the power of 25 kg. सिंपल एज दैट. ये आ गया आपका मास. ठीक है. हाँ हाँ, नेगेटिव. थैंक यू. हाँ उमर, वेरी गुड. द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द प्लैनेट इज 0.72 days. परफेक्ट. क्या आपको टाइम पीरियड गिवन है बेटा? perfect. A satellite in orbit around the planet remains above the same point on the surface of the planet. Perfect. Use the mass of the planet in B part 1 to determine the radius of the orbit of the satellite. अब पहली बात तो मैं आपको बताऊं, ये सवाल लोगों को समझ ही नहीं आया था. This सवाल was unclear to most of the students. देखो क्या लिखा हुआ है. The period of rotation of the planet is this. Planet इस पीरियड से रोटेट कर रहा है. A satellite in the orbit around the planet remains above the same point on the surface of the planet. बेटा अगर ये planet है, and let's say ये satellite है, they are remaining above each other at the same point. इसका मतलब क्या है? कि सैटेलाइट जो ऑर्बिट कर रही है, सैटेलाइट जो ऑर्बिट कर रही है अराउंड द प्लैनेट, लेट्स से सैटेलाइट इस तरह ऑर्बिट कर रही है अराउंड द प्लैनेट. If you want the satellite to remain at the same point above the surface of the planet, that means जो satellite orbit कर रही है around the planet, that satellite has a time period of what? 0.72 Earth days. या 0.72 days कह लो. Perfect. 0.72 days is the time period of the satellite. Perfect. अच्छा, अब क्या करेंगे? What will we do? We have to calculate radius. बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आप बहुत सिंपल सा काम करने वाले हो यहाँ पे. यू विल से द सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि बैकवर्ड डायरेक्शन में हम मार्क करते हैं, ये मैंने बताया था क्यों, बिकॉज इट मेक्स कैलकुलेशन इजियर, विल बी इक्वल टू द इनवर्ड ग्रेविटेशन फोर्स. परफेक्ट. You will say the centripetal force is equal to the inward gravitation force. What is the formula of centripetal force that we will use? What? Kepler's law. Shabash. Very good. What is the formula of centripetal force that you will use? बेटा मैंने आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक ट्रिक बताई थी कि जब भी आपको टाइम पीरियड गिवन होगा, आप सेंट्रीपिटल फोर्स का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? mr² Okay, where m is the mass of the planet. Perfect. Mass of the satellite. What will be the gravitational field? Listen, capital G, capital M, small m divided by r square. Capital M क्या है बेटा? Mass of the planet. Small m cancel out. Take radius to the other side, it becomes radius cube is equals to capital G, capital M divided by W square.
अच्छा, आप डब्ल्यू स्क्वायर को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे भाई? हाउ विल यू रिप्रेजेंट डब्ल्यू स्क्वायर? यू विल से कैपिटल जी, कैपिटल एम, डिवाइडेड बाय 2 पाई ओवर टी होल स्क्वायर। ठीक हो गया। नाउ डू यू हैव ऑल द वैल्यूज? बेटा आपके पास कैपिटल जी की वैल्यू है, यस, 6.67 इंटू टेन इज द पावर ऑफ -11। डू यू हैव द वैल्यू ऑफ कैपिटल एम? 8.8 इंटू टेन इज द पावर ऑफ 25। डू यू हैव द वैल्यू ऑफ टाइम? यस, 0.72 डेज। क्या आप आर निकाल सकते हो? जी बेटा बिल्कुल निकाल सकते हो। टेक अ क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। कैपिटल जी की वैल्यू है 6.67 इंटू टेन इज द पावर ऑफ -11। कैपिटल एम की बच्चे क्या वैल्यू है मुझे बताओ? 8.8 इंटू टेन इज टू द पावर ऑफ 25। ठीक हो गया भाई। अच्छा, डिवाइड किससे करेंगे? 2 पाई ओवर टी। 2 पाई डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड, दैट इज व्हाट? टाइम पीरियड क्या है भाई? 0.72 अर्थ डेज। 0.72 अर्थ डेज, 0.72 इंटू 24 आवर्स, 60 मिनट्स इन ईच आवर, 60 सेकेंड्स इन ईच मिनट। बेटा टाइम को सेकंड में करना ज़रूरी है। व्हाट डज योर रेडियस कम आउट टू बी? रेडियस क्या आ जाता है? यस, एक बच्चे ने मुझे बता दिया, बड़ा फास्ट चल रहा है वो बच्चा, वेरी गुड वहाब। रेडियस की वैल्यू क्या आती है भाई? R is equals to 8.3 into 10 raised to the power of 7 meters. This is your answer. Nothing complicated. और बेटा ये रेडियस ऑफ द ऑर्बिट मार्क किस तरह होता है? अगर मैं एग्जामिनर होता तो आपको मार्क करने के लिए भी कहता कि रेडियस ऑफ द, बताओ रेडियस ऑफ द ऑर्बिट किस तरह मार्क करोगे? यू विल मार्क इट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सैटेलाइट, मार्क इट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सैटेलाइट टू द सेंटर ऑफ द प्लैनेट। ये होता है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ओहो, अभी इरेज, पता था मुझे ये होने वाला है। दिस इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सैटेलाइट टू द सेंटर ऑफ द प्लैनेट। आगे बढ़ते हैं चलो। द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट इज 8400 ms minus 1। द मास ऑफ द सैटेलाइट इज 1200। Calculate the additional energy required to move the satellite from its orbit to infinity। बेसिकली क्या कह रहे हैं बेटा आपसे वो? The examiner is saying at the current position. The examiner is saying that at the current position, you have a kinetic energy of this. You have to move the satellite to infinity. You have to move the satellite to infinity. Perfect. तो बेसिकली आपने क्या करना है? व्हाट डू यू हैव टू डू? चलो इसको लॉजिकली सोचते हैं थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकली सोचते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। देखो बेटा, हो ये रहा है कि सैटेलाइट और प्लैनेट कुछ इस सिचुएशन में, ये आपका प्लैनेट है एंड लेट्स से दिस इज योर सैटेलाइट। ठीक है। अब मैंने कौन सा व्यू बनाया है? मैंने टॉप व्यू बनाया है। ठीक है, टॉप व्यू बना रहा हूँ। ये सैटेलाइट है, ये प्लैनेट है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज आर। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज आर। व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ आर? अभी कैलकुलेट किया था बेटा। What is this value of R? I guess अभी हमने क्या calculate? 8.3 into 10 raised to the power of 7. Perfect. So this is 8.3 into 10 raised to the power of 7 meters. Perfect. This is the distance between the planet and the satellite. Okay. Now you have to calculate the energy or the additional energy required to move the satellite from its orbit to infinity. बेटा अगर आपने सैटेलाइट को इन्फिनिटी पे ले जाना है तो what energy will you require? You will require the gravitational potential energy। gravitational potential energy क्या होगी? Negative capital G, capital M, small m divided by R। What is G? 6.67 into 10 raised to the power of -11। Perfect। Capital M is what? 8.8 into 10 raised to the power of 25। बेटा स्मॉल m क्या है? मास ऑफ द सैटेलाइट क्या है? 1200। रेडियस क्या है या डिस्टेंस बिटवीन द सैटेलाइट एंड द प्लैनेट क्या है? 8.3 into 10 raised to the power of 7। Can you calculate this gravitation potential energy? बेटा क्या आप ये gravitation potential energy निकाल सकते हो? Anyone in the chat who would like to calculate this? Let's calculate this। 6.67 into 10 raised to the power of -11 into 8.8 into 10 raised to the power of 25 into 1200, perfect, divided by 8.3 into 10 raised to the power of 7। मेरा आंसर आ रहा है 8.5।
8.5 के करीब आ रहा है मेरा आंसर। 8.5 इंटू 10 raised to the power of 10। My answer is coming out to be 8.5 into 10 raised to the power of 10 joules। अब बेटा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इस एनर्जी की वैल्यू का मतलब क्या है? शाबाश उमर, वेरी गुड। अब इस एनर्जी की वैल्यू का मतलब क्या है? दिस मीन्स दैट अगर सैटेलाइट इधर है, इफ द सैटेलाइट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8.3 into 10 raised to the power of 7, it requires an energy of 8.5 into 10 raised to the power of 10 joules to escape till infinity. It requires this much amount of energy to escape till infinity. Now analyze the satellite। बेटा सैटेलाइट को एनालाइज करो। सैटेलाइट को एनालाइज करो। सैटेलाइट के पास अभी क्या कोई एनर्जी है? बेटा लेट से आपको कोई पेयर ऑफ शूज पसंद आ गए, कोई पेयर ऑफ जॉर्डन्स पसंद आ गए, ठीक है। उनकी प्राइस है लेट से कोई $10,000। अभी आपके पास कितने डॉलर्स हैं? या अभी सैटेलाइट के पास कितनी एनर्जी है? कैन यू कैलकुलेट दैट? बेटा अभी सैटेलाइट के पास ओनली काइनेटिक एनर्जी है। And can you calculate that? Yes, you are given the velocity, you are given the mass. You will say 1 upon 2 into the mass, that is 1200, into the velocity curve square, that is 8400 square. Can we calculate this answer? Yeah. This comes out to be what? Kinetic energy for the satellite comes out to be 4.2 10 raised to the power of 10। तो बेटा आपने कोई 10 रुपए की चॉकलेट लेनी है। आपने कोई 10 रुपए की चॉकलेट लेनी है, चलो सस्ता कर देते हैं, आपने कोई 10 रुपए की चॉकलेट लेनी है। आपके पास अभी 8.5, या लेट से आपने कोई 8.5 रुपीज़ की चॉकलेट लेनी है। अभी आपके पास सिर्फ 4.2 रुपीज़ है। आपने एडिशनल कितने पैसे चाहिए? एडिशनल कितनी एनर्जी चाहिए? हाउ विल यू कैलकुलेट दैट? वेरी वेरी इजी। Gravitation potential energy minus kinetic energy. This comes out to be 8.5 into 10 raised to the power of 10 minus 4.2 into 10 raised to the power of 10. This comes out to be 4.3 into 10 raised to the power of 10 joules of energy. Simple as that, कुछ भी complicated नहीं है। Is there any questions पूरे क्वेश्चन 1 में? क्वेश्चन 1 में कोई सवाल है बेटा तो पूछ लो। बिल्कुल कोई सिंपल सी भी चीज़ ना समझ आई। क्लियर है क्वेश्चन 1? आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। Let's move ahead. Let's see this. By referring to both kinetic energy and potential energy, explain what is meant by internal energy of an ideal gas. Okay. What is meant by internal energy of an ideal gas? ठीक है। या वह आप सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। By referring to kinetic energy and potential energy, explain what is meant by internal energy of an ideal gas. Internal energy of an ideal gas क्या होती है बेटा? Sum of kinetic energy and potential energy of molecules moving in a random motion. Sum of, you can say, you can say, sum of kinetic energy and and potential energy of molecules या particles कह लो, moving in random motion. Now, if you write this definition here, आपको यहाँ पे 1 मार्क मिलेगा। Because you have very conveniently ignored this keyword. You have to tell the internal energy of an ideal gas. So you will say, in an ideal gas, in an ideal gas, in an ideal gas, in an ideal gas. Since intermolecular forces are negligible, intermolecular forces are negligible, potential energy becomes zero. Potential energy becomes zero, and internal energy is equal to kinetic energy. Internal energy is equal to काइनेटिक एनर्जी। खूबसूरत आंसर। आंसर देख के मुझे खुद अच्छा लग रहा है कि कितना अच्छा आंसर लिखा हुआ है। वाह। सर कैन वी राइट माइक्रोस्कोपिक? हाँ लिख सकते हो। अच्छा,
दोज हु वांट टू राइट अ मोर खूबसूरत आंसर, दोज हु प्रेफर ब्यूटी थोड़ा सा और, दे कैन राइट हियर माइक्रोस्कोपिक सम। उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन थोड़ा सा आंसर बहुत अच्छा हो जाना है, अच्छा दिखेगा आंसर, माइक्रोस्कोपिक सम। Let's see this. A fixed mass of an ideal gas is at a temperature of 20 degrees centigrade is sealed in a cylinder by a piston. Perfect. तो बेटा ये एक फिक्स मास ऑफ गैस है दैट इज एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड. परफेक्ट. द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज दिस. थर्मल एनर्जी सप्लाइड टू द गैस एंड इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस टू दिस. परफेक्ट. तो ये चीजें मार्क कर लिया करो बेटा. ये इनिशियल वॉल्यूम है, लेट्स लेबल दिस एज वी इनिशियल. और ये फाइनल वॉल्यूम है, लेट्स लेबल दिस एज वी फाइनल. ओके ओके. अच्छा देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक मसला किया हुआ है यहाँ पे, एक मसला किया हुआ है. द एग्जामिनर हैज अगेन प्लेड विथ यू गाइस. ये फौरन से ही मुझे समझ आ गया. कैन यू सी द वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय दिस अमाउंट. ये फाइनल वॉल्यूम नहीं है. व्हाट विल बी द फाइनल वॉल्यूम? द फाइनल वॉल्यूम विल बी 1.24 into 10 is the power of minus 4 plus the increase in volume or the change in volume. 1.24 into 10 is the power of negative 4 plus 5.2 into 10 is the power of minus 5. So maybe we need this final volume in the question ahead. Maybe we don't need it. मुझे नहीं पता. I haven't done this question beforehand. So let's see what are the surprises ahead. Let's see what are the surprises ahead. 5.2 into 10 is the power of negative 5. ये फाइनल वॉल्यूम आपका आ गया 1.76 into 10 is the power of negative 4 मीटर क्यूब. चलो. The piston is freely moving so that the gas is always at atmospheric pressure. ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है. यू हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस. बेटा इससे सिंपल सवाल हो नहीं सकता. एग्जामिनर ने लिटरली आपके लिए मजदूरी करके दे दी है. आप एग्जामिनर ने लिटरली मजदूरी करके दे दी है. ठीक है. चलो नाउ व्हाट विल यू डू? यू विल से, यू विल से दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम. बेटा प्रेशर क्या है? 1.01 into 10 raised to the power of 5. Change in volume क्या है बेटा? 5.2 into 10 raised to the power of negative 5. What will this work done come out to be? ये work done क्या आ जाएगा बेटा? This work done comes out to be 5.25 joules. And since we are undergoing expansion, volume increase हो रहा है. And you have to state work done by the gas, it will be positive 2.52 joules. वैसे पॉजिटिव नहीं भी लिखते तो भी कोई मसला नहीं. Let's further move ahead. Calculate the final thermodynamic temperature of the gas. You have to calculate the final thermodynamic temperature of the gas. ठीक है. We have to calculate the final thermodynamic temperature of the gas. How will you calculate the final thermodynamic temperature? If you थोड़ा सा notice, if you थोड़ा सा notice, बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे प्रेशर आपका क्या कर रहा है? थोड़ा सा, आप थोड़ा सा अक्ल लगाने की ज़रूरत है. देखो हर चीज़ A2 में मुश्किल नहीं होती, कुछ चीज़ें आसान भी होती हैं. यहाँ पे प्रेशर क्या था? कांस्टेंट था. वेयर वाज इट रिटन? द पिस्टन. सो दैट द प्रेशर ऑलवेज रिमेन्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जब भी प्रेशर आपका कांस्टेंट रहेगा, जब भी आपका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, व्हाट डिड आई टोल्ड यू? वोल्टेज और टेम्परेचर का कौन सा फॉर्मूला लगता था? V1T1 is equals to V2T2. ये वाला formula will be applied if pressure remains constant. This formula states that pressure is constant. तो चलो ये formula लगा देते हैं. बेटा नहीं, वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव होगा बिकॉज आपकी एक्सपेंशन हो रही है. ये मेरे ख्याल से मैं थर्ड टाइम डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन चलो कर लेते हैं. इन वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस एक्सपेंशन में क्या होता है? एक्सपेंशन के सिनेरियो में वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव. कंप्रेशन के सिनेरियो में व्हाट हैपेंस टू वर्क डन बाय द गैस? इट इज नेगेटिव. सिंपल. सिमिलरली व्हाट अबाउट वर्क डन ऑन द गैस? एक्सपेंशन के सिनेरियो में इट इज नेगेटिव. कंप्रेशन के सिनेरियो में इट इज पॉजिटिव. सिंपल. बेटा वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव इन एक्सपेंशन, नेगेटिव इन कंप्रेशन. वर्क डन ऑन द गैस नेगेटिव इन एक्सपेंशन, पॉजिटिव इन कंप्रेशन. सिंपल एज दैट. सिंपल एज दैट. कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है. चलो.
You had to calculate the final thermodynamic temperature of the gas. What will you do here? किस तरह निकालोगे फाइनल? हाँ, ये अली चलिए गया क्या क्लास से? सर, आई एम अनेबल टू टेक द क्लासेस ड्यू टू क्लासेस। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट, यू कैन डू दिस। ठीक है। एंड अपॉलॉजीज यार, अगर टाइम्स मैच नहीं कर रहे, रियली रियली सॉरी। कुछ स्टूडेंट्स के नहीं कर रहे थे, मैंने चेंज किए, अब वापस नहीं कर रहे, तो अब बहुत बहुत सॉरी यार। चलो, अब व्हाट विल यू डू हियर? यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। वॉल्यूम वन क्या है बेटा? या इनिशियल वॉल्यूम क्या है? 1.24 इंटू 10 इज द पावर ऑफ -4, सो यू कैन राइट हियर 1.24 into 10 is the power of -4. What is the initial temperature? Initial temperature क्या था? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो बिल्कुल ही उस्ताद स्टूडेंट्स होंगे ना, वो यहाँ पे 20 लेके आ जाएंगे। नहीं बेटा, ये टेम्परेचर आपका थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है। हाउ विल यू राइट द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर? 273 प्लस 20। अच्छा, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? अब मैंने तो इनिशियली निकाल लिया था, आई डिडंट नो इट विल बी यूज्ड और नॉट। 1.76 into 10 raised to the power of -4. Let's put it here. 1.76 into 10 raised to the power of -4. Can you calculate the temperature too? Yeah, temperature too, or the final temperature comes out to be what? The final temperature comes out to be 416 Kelvin. Simple as that. Let's further move ahead. The mass of the gas is 16 grams. Perfect. For this expansion, there is a net transfer of 960 joules of thermal energy to the gas. Perfect. Calculate the specific heat capacity of the gas at this pressure. तो आप क्या करोगे? You will say Q is equals to mc delta T. What is Q? What is the energy transfer? 960. बेटा, मास क्या है गैस का? 16 grams. How will you write it? 0.016. Specific heat capacity is C. What is the change in temperature? Change in temperature किस तरह निकालोगे? फाइनल टेम्परेचर इज 416 Kelvin। इनिशियल टेम्परेचर क्या है बेटा? 293 Kelvin। माइनस कर दो। 416 Kelvin माइनस 293 Kelvin। सिंपल। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या आ जाएगी? 960 डिवाइडेड बाई 0.016 इंटू 416 माइनस 293। Simple. Can you calculate this specific heat capacity? Specific heat capacity comes out to be 490 joules per kg per Kelvin. This comes out to be 490 joules per kg per Kelvin. Simple. Let's move on to part C. The piston in B is allowed to return to its starting temperature. अच्छा भाई, अब starting temperature पे जा रहे हो. The piston is now fixed in position. Perfect. The piston is now fixed in position. ठीक है? नहीं, 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 नहीं. No. यार मर्जी है. You can write it as 416 as well. Three significant figures है. टू सिग्निफिकेंट फिगर्स पे करोगे तो 420 हो जाएगा, तो देखो, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स या थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स पे आंसर रखो, नो बडी विल कट योर मार्क्स। अच्छा, द गैस इन बी इज नाउ अलाउड टू रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग टेम्परेचर। परफेक्ट। द पिस्टन इज नाउ फिक्स्ड इन पोजिशन। नाउ व्हाट डज दिस मीन? नाउ व्हाट डज दिस की पॉइंट मीन? दिस मीन्स दैट वॉल्यूम अब क्या होगा बेटा? अब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। नाउ योर वॉल्यूम इज कांस्टेंट। Now your volume is constant. Thermal energy is supplied to increase the temperature to the final temperature. Perfect. Use the first law of thermodynamics to suggest and explain how the specific heat capacity of gas for this situation compares with the value in B3. अच्छा, अगर piston fix होगा बेटा, so what will happen? Volume is constant. Initial volume will be equal to the final volume. Perfect. Now we have to use the first law of thermodynamics. We have to use the first law of thermodynamics. Perfect. So what was the first law of thermodynamics, beta? The first law of thermodynamics क्या था? Change in internal energy is equals to Q plus work done on the gas. Yeah, ये लिख लो. Yeah, you can also write this law as well.
Q is equals to change in internal energy plus work done by the gas. Both formations will give you the same answer. बेटा दोनों फॉर्मेशन से सेम आंसर आएगा, कोई लड़ने की बात नहीं है कि कौन सा फॉर्मूला सही है, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ, अब आ जाओ इस पार्ट पे कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल यू राइट हियर, यू विल से फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, 3 मार्क्स का सवाल है। सिंस change in volume is zero, or you can say volume is constant. Volume is constant. Work done by the gas or on the gas will be zero. Whatever you are writing, जो भी आप लिख रहे हो, वर्क डन बाय द गैस ऑन द गैस, तो जीरो होगा, ठीक है। नाउ अब थोड़ा सा गौर फरमाना, थोड़ा सा गौर फरमाना। Now, initially you had a scenario like this. Initially you had a scenario like this where Q is equals to change in internal energy plus work done by the gas. I am using the first law of thermodynamics. मैं first law of thermodynamics का ये वाला version use कर रहा हूँ, this वाला। Q is equals to change in internal energy plus work done by the gas. So initially, let's say you had 10 joules of internal energy and your work done by the gas was 2. So your Q was coming out to be 12 joules. And in 12 joules, you were raising your temperature by, let's say, 10 degree centigrade. Perfect. सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ अभी, सिर्फ एग्जाम्पल। Now what has happened is, बेटा अब ये हुआ है, अब ये हुआ है, जरा सा देखो। Q is equals to change in internal energy plus work done by the gas. Work done by the gas तो zero हो गया, but change in internal energy is 10. Q becomes what? 10 joules. And now as well, your change in temperature is 10 degree. बेटा आपका change in temperature same है. You have the same final temperature or the same change in temperature despite having a smaller value of Q. Despite having a smaller value of Q, आपका change in temperature same है. If I put it in a more mathematical way, if I put it in a more mathematical way, चलो जिनको मैथमेटिक्स पसंद है उनके लिए थोड़ा सा और मैथमेटिकल वे में, Q is equals to mc delta t. M is a constant, delta t is a constant because the change in temperature remains same. So Q is directly proportional to specific heat capacity. If the Q is decreasing, specific heat capacity will decrease as well. बेटा अगर Q डिक्रीज होगा तो आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विल डिक्रीज एज वेल। अच्छा आप बहुत सारे सवाल आए हुए हैं तुम लोग के, चलो ये आंसर कर देते हैं, फिर आंसर भी लिख लेंगे। यू विल से दैट since the same temperature rise, you will say since the same temperature rise is happening for a lesser energy, since the same temperature rise is happening for a lesser amount of thermal energy, your since since the temperature rise or change in temperature is same for a lesser thermal energy, for a lesser thermal energy, specific heat capacity becomes specific heat capacity becomes this. Specific heat capacity lowers, या you can say decreases. Specific heat capacity decreases या फिर lowers. Very good. अब आ जाओ क्वेश्चन 3 पे भाई। A small object of mass 24 grams rest on a platform। ठीक है भाई, ये एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है, एक छोटू सा कोई ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑफ 24 grams। The platform is attached to an oscillator as shown in figure 3.1। Perfect. The oscillator moves the platform up and down। ठीक है भाई, आप प्लेटफॉर्म को अप भी मूव कर रहे हो, डाउन भी मूव कर रहे हो, ठीक है। The total energy of the oscillation of the object is this। बेटा ये total energy है, this is the total energy of the object। Perfect. In one oscillation the object travels a total distance of 14 millimeter। अच्छा अब ये क्या बता रहा है, in one oscillation the object travels a total distance of 14 millimeter। अगर आपको थोड़ी सी वेव्स की नॉलेज है या थोड़ी सी ऑसिलेशन की नॉलेज है, व्हाट डज दैट मीन।
बेटा एक ऑसिलेशन किस तरह कंप्लीट होती है, एक ऑसिलेशन किस तरह कंप्लीट होती है? बेसिकली लेट्स से दिस इज द मेन पोजीशन, let's say this is the main position. How will one oscillation get completed? You will move downward to the minimum position, then to the mean position, then again to the maximum position, and then to the mean position. So this four part journey is known as one oscillation, and the total distance traveled during this one oscillation is 14 mm. Acha. So basically, let's label this. This is the first part, second part, third part, fourth part. The total distance traveled in the entire journey is 14 mm. This is a four-part journey. बेटा if I ask you to calculate the amplitude, सवाल में नहीं पूछा हुआ, मुझे भी कोई अंदाजा नहीं है आगे सवाल में पूछा हुआ है या नहीं। ठीक है। अच्छा, एम्पलीट्यूड क्या होगा बेटा? एम्पलीट्यूड विल बी द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 4। दिस कम्स आउट टू बी व्हाट? एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 4। ये हो जाएगा 3.5 मिलीमीटर। एम्पलीट्यूड इज 3.5 मिलीमीटर। ठीक है, मुझे नहीं पता कि ये आगे यूज होता है या नहीं। बेटा मुझे कोई वहमो गुमान नहीं है कि ये आगे यूज होगा या नहीं, मैंने निकाल लिया। एम्पलीट्यूड इज ऑलवेज मार्क फ्रॉम द मेन पोजीशन, एम्पलीट्यूड इज ऑलवेज मार्क फ्रॉम द मेन पोजीशन। चलो मैं थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करता हूँ। You have to calculate the angular frequency of the oscillation. Perfect. We know that the total energy in simple harmonic motion can be written as what? 1 upon 2 m w square x naught square. What is the total energy? 2.2 into 10 raised to the power of negative 4. Half into the mass. What is the mass, beta? Mass is 24 grams. How can you convert it into kilograms? 0.024. Perfect. 0.024 आपका mass आ गया. Perfect. What is W? What is W? We don't know. Let's put W square like this. Let's put W square like this. X naught क्या है भाई? X naught is 3.5 millimeter. So 3.5 into 10 raised to the power of negative 3 whole square. Can you calculate this answer? Can you calculate the answer of W? 2.2 into 10 raised to the power of negative 4 into 2 divided by 0.024. Perfect. और W की वैल्यू आ जाएगी. W वैल्यू comes out to be what? W की वैल्यू बेटा comes out to be 39 radians per second. This comes out to be 39 radians per second. Perfect. Let's move ahead. बेटा डिवाइड बाय 4 वाली चीज एग्जाम में याद कैसे आएगी? देखो अब यहाँ पे मुझे, अब ये मसला है ना, तुम लोगों को डिटेल में जाके समझाओ तो फिर टाइम ज़्यादा लगता है और फिर कुछ स्टूडेंट्स को टाइम का मसला है। देखो हमेशा वेव्स 4 क्वार्टर्स में चलती है। हमेशा वेव्स 4 क्वार्टर्स में चलती है, मेन पोजीशन से मैक्सिमम, मैक्सिमम से मीन। ये मैं एएस में शायद पढ़ा है बच्चों को, मीन से मिनिमम और मिनिमम से मैक्सिमम। तो हमेशा 4 क्वार्टर्स में वेव चलती है। The frequency of the oscillator is fixed and the amplitude of the oscillation is gradually increased. ठीक है, the frequency is fixed and the amplitude of the oscillation is gradually increased. Perfect. Calculate the maximum amplitude of the oscillation so that the object does not lose contact with the platform. बहुत अच्छा सवाल है. You have to calculate the maximum amplitude of the oscillation so that the object does not lose contact with the box. Which formula are you going to apply? You are going to apply acceleration is equals to w in w square into x naught. Perfect. लेकिन अब यहाँ पे acceleration क्या लो? What will be your maximum acceleration? Yes, बेटा maximum acceleration क्या होगी? The object will lose contact with the platform if the acceleration of the object is greater than 9.81 ms minus 2. Perfect. So you can put the acceleration as what? 9.81. W है हमारे पास, yes, 39 का स्क्वायर, x नॉट निकाल लो. x नॉट comes out to be what? 9.81 divided by 39 का स्क्वायर. x नॉट comes out to be what? x नॉट किसके इक्वल आ जाएगा? 6.4 into 10 raised to the power of minus 3 meters. Simple as that. 6.4 into 10 raised to the power of minus
जब भी आपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालना होगा फॉर द ऑसिलेशंस टू नॉट लूज कांटेक्ट, बेटा जब भी आप चाहते हो कि ऑब्जेक्ट लूज कांटेक्ट ना करे एंड यू हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, यू विल यूज द एक्सेलरेशन एट 9.81. लेट्स मूव अहेड. The amplitude of oscillation is increased so that it is greater than the value in B part 1. ठीक है, एम्पलीट्यूड आप इंक्रीज कर चुके हो टू अ वैल्यू ग्रेटर देन व्हाट, वैल्यू ग्रेटर देन 6.4 into 10 is the power of minus 3. State and explain the position in an oscillation where the object first loses the contact with the platform. बेटा किस यू कैन से किस मूवमेंट में आप जो है वो बॉक्स का कांटेक्ट लूज हो जाएगा विद द प्लेटफॉर्म, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक? The object will lose contact with the platform at the top of the oscillation. At the top of the oscillation. Why? Because top of the oscillation pay your contact force is minimum. Top of the oscillation pay your contact force is minimum, so you will lose the contact at the top of the oscillation since contact force is minimum at top of oscillation. Simple. ये थोड़ा सा यूनिक टाइप सवाल था. दिस इज अ वंस इन अ 10 ईयर का क्वेश्चन, नॉट रिपीट्स एवरी टाइम. लेट्स फिर देन मूव अहेड. क्वेश्चन 4 पे आ जाओ. Three capacitors are connected as shown in figure 4.1. Determine the total capacitance and microfarads of the network of these three capacitors. These two are connected in parallel. These two are connected in parallel. So what will be the total capacitance here? The total capacitance of this parallel combination will be 30 microfarad because in parallel we add them up. This 30 microfarad and 45 microfarad will be connected like this. 45 microfarad or 30 microfarad is तरह connected होगा. They are connected in series. Can you calculate the total? 1 over 45 plus 1 over 30 is equals to the total capacitance. Total capacitance comes out to be what? Calculate करो बेटा. 1 over 45 plus 1 over 30, 1 divided by answer 18 microfarad. Shabash, very good. 18 microfarad comes out to be your answer. Simple. Let's move ahead. Let's move ahead. Now, a capacitor of capacitance 40 microfarad is connected to a variable power supply initially set to 8 volts. The output of the power supply increases so that the potential difference across the capacitor increases to this. You have to calculate the increase in energy stored in the capacitor. Beta, how will you calculate the increase in energy stored in the capacitor? Energy stored in the capacitor is equal to 1 upon 2 CV square. So increase in energy will be equal to what? 1 upon 2 C into the final voltage square minus the initial voltage curve square. What is the capacitance, beta? Capacitance की value क्या है? 45 microfarad. So 45 into 10 is the power of minus 6. What is the final voltage? Final voltage is 9.6 curve square. What is the initial voltage? 8 curve square. What does your change in energy comes out to be? What does your change in energy comes out to be? 6.3 into 10 is the power of minus 4. 6.3 into 10 is the power of minus 4 joules is your change in energy. Simple as that, nothing complicated. Let's further move ahead. A sinusoidal AC power supply is connected to the input of a bridge rectifier. The output of the rectifier is connected to a load resistor. Complete the circuit in figure 4.2 by adding a capacitor to smooth the potential across the load resistor. How will we add a capacitor here? A capacitor is always added in parallel to the resistor like this. Simple. Okay, so determine the time constant in milliseconds of the smoothened circuit. Now this is an interesting question. Usually ये repeat होता है every 2 years and most of the students still don't know how to answer this. You have to calculate the time constant. Now, how can we do that? We can do that by utilizing this equation. V is equals to V naught E minus T over tau. E minus T over tau. We can utilize this equation.
we can utilize this equation. How will we utilize it? Let's see. If you analyze beta maximum voltage क्या है? If you analyze maximum voltage क्या है? The maximum voltage here or V naught here is what? It is 4 volts at a time of 5. So V naught is 4 volts. Perfect. This is your voltage. This voltage decreases to what? This voltage decreases to this value. This value is what? Beta ये value क्या है? Let's see. This value is 3.2. Perfect. So your final voltage is 3.2. How much time do we take for this? How much time do we take for this? How much time is this? If you analyze, this is 10, this is 11, 12, and 13. 13. So from 5 to 13, how much time will you spend? 8 milliseconds. E minus time is 8. Okay, into 10 raised to the power of minus 3. How will you write tau? How will you write tau? Tau is equals to resistance into capacitance. Are you given the capacitance? Capacitance आपको given है? Yes or no? Hmm. Are you given the capacitance? I think you are given. अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. Basically, you don't need the capacitance. You have to calculate the time constant. So this will remain as a variable. This will remain as a variable. Bring 4 to this side. 3.2 divided by 4. Take ln of this. Perfect. This comes out to be negative 8 into 10 raised to the power of minus 3 divided by tau. What does your tau comes out to be? Tau comes out to be minus 8 into 10 raised to the power of minus 3 divided by ln of 0.8. You can calculate the value of tau. What does tau comes out to be? Tau comes out to be 36 milliseconds. Your time comes out to be 36 milliseconds. This is the answer. Let's further move ahead. A sinusoidal AC power supply has a maximum power of this. ठीक है भाई, एक sinusoidal AC power supply है जिसकी power supply की value is this. State the value of the mean power when the output of the power supply is fully rectified. बेटा आपने mean power निकालनी है when the output is fully rectified. How will you calculate the mean power? Mean power is equals to maximum power divided by 2. What is maximum power? 16 divided by 2. This comes out to be 8 volts. You have to calculate the mean power when you are half wave rectifying the circuit. बेटा हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होता था बच्चों? कैन यू टेल मी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होता था? हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होता था? डू यू रिमेम्बर? हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में यू यूज टू हैव योर voltage like this, one cycle and then one zero. तो बेटा पावर क्या हो जाती थी? हाफ. क्योंकि वोल्टेज क्या हो गया? हाफ. You only have half of the cycles of voltages in half wave rectification. So this power mean will get further halved. 8 divided by 2 will give you the mean power in an half wave circuit. ठीक है, वेरी गुड मोमेंट, वेरी गुड बच्चे, शाबाश. चलो अब आगे आ जाओ भाई. An object in a circle moves at constant speed. Perfect. State the name of two quantities that vary during the motion of the object. भाई क्या क्या quantities vary करेंगे during the motion of a object? First of all, velocity. Second of all, acceleration. Beta velocity and acceleration of the circle will vary. Simple. Let's further move ahead. Let's further move ahead. आगे देखते हैं भी क्या लिखा हुआ है. If you analyze this question further, a charged particle of mass m with charge q enter the region of uniform magnetic field perpendicular to the field lines. The flux density is B. Perfect. The particle travels in a circle with period t and radius r. Perfect. By considering the magnetic force acting on the particle, show that B is equal to 2 pi m divided by qt. बेटा अब हमने बेसिकली क्या करना है? A charged particle of mass m and charge q enters a magnetic field. This causes the charge to move in a circular direction. Let's say this is a charge.
This is moving in a circular direction. There will be an inward magnetic force and an outward centripetal force. What will be the magnetic force on the charge? BQV. What will be the centripetal force? MV square over R. V cancel out. Perfect. You have to make B the subject. Let's make B the subject. MV divided by QR is your answer. But if you analyze, beta, this is not what the formula is asking you to do. What can you do here? बेटा आप क्या कर सकते हो यहाँ पे? What can you do here? You can say that I can replace. I know that V is equals to RW. Perfect. I can replace V over R with W. I can replace this V over R with W. Let's do that. B is equals to MW over Q. Now, how can you write W, beta? W को किस तरह लिख सकते हो? W is also equals to 2 pi over T. Let's substitute W here. B is equals to 2 pi divided by QT. The answer comes out to be 2 pi M divided by QT. Simple as that, nothing complicated. आ गई बात समझ? Yes or no? चलो, let's move ahead. The particle is an alpha particle. The period of the circular motion is 2.5 microseconds. Calculate B. बेटा अब हमने B कैलकुलेट करना है. B का फॉर्मूला क्या है? B is equals to 2 pi M divided by Q capital T. What is the mass of an alpha particle? What will be the mass of an alpha particle? 4 times the atomic mass unit, that is 1.66 into 10 raised to the power of minus 27. What is the charge of an alpha particle? 2 times the mass of 2 times the charge of a proton. 2 into 1.6 into 10 raised to the power of minus 19. What is the time period? 2.5 microseconds. 2.5 into 10 raised to the power of minus 6. Can you calculate the magnetic flux density? Can you calculate the magnetic flux density? Yeah, magnetic flux density comes out to be what? 0.052 Tesla. Simple as that. 0.052 Tesla is your magnetic flux density. चलो आगे बढ़ते हैं. Let's move ahead. A second alpha particle is in the same uniform field. It travels in a circle of radius 2r. Perfect. Beta, it is traveling in a circle of radius 2r. Perfect. State and explain the State and explain how the period of the motion of the two particles compare. Perfect. अब हमने बताना है how the period of motion of the two particles will compare. थोड़ा सा गौर और फिक्र करेंगे. थोड़ा सा गौर और फिक्र. So we know what? We know magnetic flux density is what? We know magnetic flux density is equals to 2 pi over qt. We know magnetic flux density is equals to what? 2 pi over qt. Perfect, perfect, perfect. Now, क्या करोगे बेटा? What will you do? You will say that magnetic flux density is equals to 2 pi m over qt. Can you make T the subject? Yeah, T is equals to 2 pi m over q b. Can you realize, क्या आप realize कर सकते हो कि time period is not dependent on radius? Can you realize that time period is not dependent on radius? Yeah. If time period is not dependent on radius, will the time period be affected by radius? No. So you can write it here. लिख लो यहाँ पे. Time period is not affected. Time period is not affected by what? Time period is not affected by radius. Is not affected by radius. Hence, it remains constant. Simple. बेटा इसके बाद वापस भी ज्वाइन करना है. आज पेपर खत्म करना है इंशाल्लाह. चलो, लेट्स मूव अहेड. The speed of the alpha particle is this. An electric field is applied to so that the particle moves with constant velocity. Perfect. You have the speed of the alpha particle. Perfect.
Use your answer in B part 2 to calculate the electric field strength. Give the unit for your answer. Perfect. So beta, the speed of alpha particle is this. Okay. An electric field is applied so that the alpha particle now moves with a constant velocity. Whenever an electric field and a magnetic field are applied together, बेटा क्या सिचुएशन हो जाती है वेलोसिटी सेलेक्टर की वेलोसिटी वेलोसिटी सेलेक्टर की सिचुएशन हो जाती है इन वेलोसिटी सेलेक्टर व्हाट डू यू हैव electric force is equals to the magnetic force. What is the formula of electric force? Electric field is strength into charge. What is the formula of magnetic force? BQE. QQ cancel out. Perfect. You have to calculate the electric field strength. That is equals to B into V. B की वैल्यू क्या थी 0.052. वेलोसिटी की वैल्यू क्या है 1.1 इंटू 10 रेज़ द पावर ऑफ 6. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बेटा क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी दिस कम्स आउट टू बी 5.7 इंटू 10 रेज़ द पावर ऑफ 4. 5.7 into 10 raised to the power of 4 Newton Coulomb minus 1. Simple. Let's move on to the next one. A small coil C has 64 turns and cross-sectional area 0.71 centimeter square. The coil is placed inside a solenoid as shown in figure 6.1. ठीक है भाई coil को हमने एक solenoid के अंदर place कर दिया perfect. The center of the coil is on the central axis of the solenoid perfect. There is a constant current. There is a constant current in the solenoid. Perfect. सोलोनॉइड में करंट कांस्टेंट है तो सोलोनॉइड क्या चीज़ है भाई ये वाली बिगर कॉइल इज सोलोनॉइड स्मॉलर कॉइल इज कॉइल सी ऑन फिगर 6.2 sketch the line to show the variation of magnetic flux linkage in coil C with the position as it moves from x to y बेटा इतना अच्छा सवाल पूछ रहा है एग्जाम में थोड़ा सा फोकस कर Examiner is saying that the current in the solenoid remains same. ये जो current है ना solenoid में here, 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 here. At all these points current का magnitude is same. If the current at all these points is remaining same, what does that mean? If the current at all these points is remaining same, what does that mean? The magnetic flux density. बेटा इन सारे पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी 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 इन सारे पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी सेम रहेगी ओके इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी रिमेन सेम व्हाट विल हैपन टू द फ्लक्स लिंकेज अगर ये चीज कांस्टेंट है बेटा एरिया भी कांस्टेंट है व्हाट विल हैपन टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज it will remain constant throughout position x and y it will remain constant throughout position x and y like this perfect explain the shape of your line in a part 1 बेटा ये शेप को एक्सप्लेन करना है वो ही सर गिव ओरिजिन से क्यों नहीं? बेटा ओरिजिन से क्यों होगा भाई मुझे बताओ एक्स पे आपका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है ना एक्स पे कोई ना कोई वैल्यू ऑफ बी है तो बी की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा तो आप हमेशा पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट से स्टार्ट करोगे अगर आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बेटा सर्टेन वैल्यू पे तो आप जीरो से क्यों स्टार्ट करो चलो लेट्स फर्दर मूव अहेड explain the shape of your line in a part 1 what will you say the magnetic flux density the magnetic flux density remains constant as we move from x to y hence magnetic flux remains constant as we move from x to y as we move from x to y simple let's further move ahead अब इधर आ जाओ coil C is now held stationary at point x the current in the solenoid varies so that the magnetic flux density B at x varies from 0 to 40 as shown in figure 6.3 बेटा 0 से लेकर 40 मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इस तरह वेरी कर रही है
Calculate the maximum magnetic flux linkage. You have to calculate the maximum magnetic flux linkage. You have to calculate the maximum magnetic flux linkage. How will you do that? Maximum magnetic flux linkage is magnetic flux density maximum into area. What is the maximum magnetic flux density, beta? Maximum magnetic flux density क्या है? 0.08 multiplied by area. Are you given the area? Hmm. Are you given the area of coil C? नहीं. हाँ, given. You are given the area. This is 0.71 centimeter square. Write it here. Area will be what? 0.71 centimeter square. But बेटा अब centimeter square को meter square में भी convert करना है. If we convert centimeter into meter, we multiply it by 10 raised to the power of minus 2. If we convert centimeter square into meter square, we will multiply it by what? 10 raised to the power of minus 2 whole square. This comes out to be 10 raised to the power of minus 4. This comes out to be your answer. Maximum magnetic flux linkage. बेटा निकाल लो क्या आता है. मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज निकाल लो क्या होता है. इसको कैलकुलेट करो. फिर एक चीज़ बताता हूँ. यहाँ पे हमने कन्वीनियंटली एक चीज़ इग्नोर कर दी है. आई विल टेल यू व्हाट. कोई स्पॉट कर सकता है, चैट में बता सकता है, तो दैट विल बी गुड. नाउ योर maximum magnetic flux linkage comes out to be what? Maximum magnetic flux linkage comes out to be 5.68 into 10 raised to the power of minus 6. बट बेटा अगर आप देखो तो कॉइल सी has coil C has 64 turns of the coil. Your N is 64. So you will multiply 64 here as well. इसको 64 या N या number of coils से भी multiply करोगे. What will your final answer come out to be? Your final answer comes out to be 3.6 into 10 raised to the power of minus 4. Your final सर answer. ये ओरिजिनली फॉर्मूले में नहीं था एम? नहीं नहीं, था. होता है ओरिजिनली फॉर्मूले में एन, लेकिन अगर आपके नंबर ऑफ टर्न्स वन होते हैं ना, इफ एन इज वन या नंबर ऑफ टर्न्स इज वन, तो एन को हम यूजुअली इग्नोर कर देते हैं. ठीक है. चलो लेट्स मूव अहेड. अब आगे बढ़ते हैं भाई. लेट्स मूव अहेड. लेट्स ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. On figure 6.2, sketch a line to show the induced electromotive force in coil C from time t is equals to 0 till time t is equals to 40. बेटा आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है. आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है. हाउ विल यू डू दिस? इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस टाइम का ग्राफ किस तरह बनेगा? थोड़ी सी अकल लगेगी उसके लिए. बिना अकल के नहीं बन सकता इंड्यूस्ड ईएमएफ का ग्राफ. First of all you have to realize what is induced EMF. Induced EMF is equals to what? N into change in magnetic flux divided by change in time. Perfect. This is induced EMF. Very good moment. Very good. बेटा आप चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को आप किस तरह लिख सकते हो? यू कैन राइट इट लाइक दिस. एरिया इनटू चेंज इन बी डिवाइडेड बाय चेंज इन टी. दिस इज योर ईएमएफ. ठीक है. अब अगर थोड़ा सा सोचो तो एन एंड ए विल रिमेन कांस्टेंट. N and A will remain constant. So basically EMF will be dependent on what? Or EMF will be directly proportional to what? Change in B over change in T. But आप change in B over change in T निकालने का कोई ऑप्शन है? Yes. We are given the graph of B versus time. The gradient of this graph will be what? Change in B over change in T. The gradient of this graph will be change in B over change in T. If you notice, for the first portion from time t is equals to 0 till time t is equals to small t, your gradient is what? 0. Or you can say your change in b over change in t is 0. That means what? That means your EMF for the first half will be 0. EMF for the first half will be 0. बेटा ये ग्राफ मोस्टली स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन बिलीव में इससे इजी मेथड नहीं है इसको ड्रॉ करने. बिल्कुल हलवा करके बता रहा हूँ. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. If you see this yellow highlighted region,
What is the gradient here? Positive. Change in B over change in T is positive. Hence, EMF will be positive. EMF will be positive in this region. So, let's minimize it. Is put it here. So, in the region from small t till small 2t, you have a positive gradient. Hence, your EMF will be positive. You can make a graph like this. ये आ गया. Now the last part is remaining. Please pay attention. अच्छा बीच में आप वर्टिकल लाइंस भी ड्रॉ करोगे टू कनेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइंस यू विल मेक वर्टिकल लाइंस पर. नाउ बेटा फर्दर रियलाइज ये लास्ट वाली लाइन. व्हाट इज हैपनिंग हियर? दिस लास्ट लाइन हैज gradient as negative. Change in B over change in T is negative. Hence EMF is negative. You can draw a negative line. You can draw a negative line from 2t till 4t like this and make a vertical line here. Simple. बेटा अब एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछूं. मुझे पता है सारों ने फंबल करना है ये सवाल. मुझे बताओ why have I made the positive EMF and negative EMF of the same value? बेटा मुझे कोई बता सकता है स्टूडेंट चैट में why are the positive and negative EMF की वैल्यू सेम? वॉइस चैट में ही बताना चाहते हो तो बता सकते हो. बताओ. हम्म. यस, why are the positive and negative EMF की वैल्यूज का मैग्नीट्यूड सेम? कोई जीनियस है, कोई है जिसने ए स्टार लेना है भाई? कोई बता दे तो मैं बड़ा ही खुश हो जाऊंगा. ग्रेडियंट इज सेम. क्या बात है, क्या बात है यार. उमर और वहाब बहुत ही अच्छे यार. वेरी गुड. इफ यू एनालाइज पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रेडियंट्स का मैग्नीट्यूड क्या है? येलो रीजन और ग्रीन रीजन का ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड सेम है. सर अब आपको कैसे पता चला? अब आपको कैसे पता चला सर, या इन स्टूडेंट्स को कैसे पता चला कि हाउ इज द ग्रेडियंट सेम? इन्होंने थोड़ी सी ब्रेन पावर इस्तेमाल की है जो कि तुम लोग भी कर सकते हो. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. बेसिकली इफ यू सी बेसिकली इफ यू सी येलो वाले रीजन में you have two boxes in the x-axis and two boxes in the y-axis. Gradient here becomes what? Two boxes of y-axis divided by the two boxes of x-axis, positive one. In the green region, you have downward four boxes. In the x-axis, you have four boxes. The gradient is same but negative. ये इस तरह हमने एनालाइज किया. कोई मैजिक किया है? नो. कॉमन सेंस. लेट्स सी दिस. A metal spring rests on a smooth table. The turns of the spring are equally spaced. The ends of the springs are connected to a DC power supply as shown in figure 5, 6.5. Perfect. So ये spring है, इसके ends connected हैं to a DC supply. The spring is connected to a DC power supply using flexible leads. The spring is not under tension. With reference to magnetic field, describe and explain the change in distance between the turns of the spring when the power supply is switched on. बेटा आपने बताना है ये डिस्टेंस बिटवीन द स्प्रिंग्स के साथ क्या होगा वंस द करंट इज स्विच्ड ऑन. इफ यू एनालाइज द करंट in these wires will be in the same direction, and if the current is in the same direction, what will happen? Your wires will attract each other. As the wires attract each other, the spacing reduces. तो ये लिख लो भाई, 3 मार्क का सवाल है आई गेस. या लेट्स राइट इट इन अ नीट एंड गुड मैनर. You can say current in the current in the current in the spring, or you can say current in the spring creates creates a magnetic field creates a magnetic field around each turn of the coil. Each turn of the coil कह लो या each turn of the spring कह लो.
Perfect. Current in the spring creates a magnetic field around each turn of the spring कह लो each turn of the coil कह लो perfect. The magnetic field of one wire interacts with the current in the adjacent wire. The magnetic field in one wire हाँ ठीक है. So up till now we had deduced बेटा हमने ये deduce किया था कि current in the spring in all the spring key turns was acting in the same direction. Perfect. Current in all the turns of the spring was acting in the same direction. Perfect. Now अगर same direction में current act कर रहा था तो what have we studied? If the current acts in same direction, what have we studied? We have studied that if current acts in the same direction, what will happen? S- The wires will attract each other और हम उसका consecutively answer लिख रहे थे. So we will write here that. Okay, so we will write that current in the spring creates a magnetic field around each turn of the spring. Perfect. Oh, we will say magnetic field of one spring. Yeah, you can say magnetic field of one turn. Magnetic field in one turn. Magnetic field of one turn लिख लो in one turn लिख लो interacts with the current in the other turn or in the adjacent turn interacts with the current in the adjacent turn. This induces force. Perfect. And lastly, since current in the wires or current in the turns is in the same direction, what will happen? Since current in the turns is in the same direction, what will happen? The magnetic force will be attractive. The magnetic force will be attractive. Magnetic force will be attractive and hence distance decreases. Hence distance decreases. Simple as that, nothing complicated. आगे बढ़ते हैं बेटा. Let's move ahead. अच्छा, let's see this. A photon has an energy of this. Calculate the momentum of the photon. You are given the energy of a photon. You have to calculate the momentum of a photon. अच्छा, एक्सप्लेन कर दूं ये पार्ट. चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यार, ये पार्ट कोई मसला नहीं. बेसिकली क्या हो रहा है बेटा? बेसिकली करंट इज गोइंग थ्रू द स्प्रिंग. Current is going through each turn in the spring. Perfect. As current goes through each turn in the spring, what do you see? Current beta same direction में. Current in each turn of the spring is in the same direction. Perfect. अब अगर current in each turn of the spring is in the same direction, what does that mean? What does that mean बेटा? इसका मतलब ये है कि magnetic fields generate होंगे. Magnetic fields will be generated around each turn of the coil. Magnetic fields will be generated around each turn of the coil. Perfect. As magnetic fields are generated around each turn of the coil. ठीक है? As magnetic fields get generated around each turn of the coil, these magnetic fields interact with the current in the coil. As these magnetic fields interact with the current in the coil, this results in forces. And since the current is going in the same direction, आप देख सकते हो कि सारे के सारे current are in the same direction. This will result in what? This will result in an attractive force. Hence, the distance decreases. Simple. Let's further move ahead. A photon has an energy of this. Calculate the momentum of the photon. Okay, so we have the energy of a photon. We have to calculate the momentum of a photon. It एक formula था that we have studied. That was energy of a photon is equals to what?
momentum into c, into the speed of light. So if you have the energy of a photon, you can divide it by the speed of light to calculate the momentum. What is the energy of a photon? 3.11 into 10 raised to the power of minus 19 divided by the speed of light, that is 3 into 10 raised to the power of 8. This gives you your momentum. Momentum की value क्या आती है? What does the value of momentum come out to be? 1.04 into 10 raised to the power of minus 27. 1.04 into 10 raised to the power of minus 27. Perfect. A laser beam has a power of this. Perfect. This is the power of the laser beam. The light from the laser beam has a wavelength of this. Perfect. Calculate the number of photons emitted by the laser beam in 1 second. We have to calculate the number of photons emitted by the laser beam in 1 second. Perfect. So we know that the power is 350, 10 raised to the power of minus 3 volts. Perfect. Beta, what will be the energy of the laser beam in 1 second? What will be the energy of the laser beam in 1 second? Power into time. What is the power? 350 into 10 raised to the power of minus 3 multiplied by time, that is 1 second. The energy of the laser beam comes out to be what? 350 into 10 raised to the power of minus 3 joules. This is the energy of the laser beam. Simple. Now, a laser beam will contain numerous photons, or will or a laser beam will contain multiple number of photons. How will we calculate the number of photons in a laser beam? Very, very easy to calculate. What will we do? We will first of all calculate the energy of a photon. बेटा energy of a photon किस तरह निकाल सकते हो if you are given the wavelength? You can say energy of a photon is hc over lambda. The energy of a photon will be equal to what? 6.67 into 10 raised to the power of minus 11 into the speed of light, that is 3 into 10 raised to the power of 8 divided by lambda, that is 640 into 10 raised to the power of minus 9. Can you calculate the energy of one photon? Beta, can you calculate the energy of one photon? Yes, surely you can do that. Energy of one photon क्या आ जाएगी भाई? निकालो जरा, सारे कैलकुलेट करो. 6.67 into 10 raised to the power of negative 11. 1 second. Negative 11 multiplied by 3 into 10 raised to the power of 8. Perfect. Divided by 640 into 10 raised to the power of minus 9. I think energy of photon. 1 second. 6.67. वाओ, मैंने भी बहुत ही अच्छी गलती की है यहाँ पे. दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट बेटा. मैंने यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिखा हुआ है, और कोई तो नोटिस करो. 6.63 इंटू 10 इज द पावर ऑफ माइनस 34. यही मैं कह रहा हूँ, इतनी ज़्यादा क्यों एनर्जी आ रही है? 6.63 इंटू 10 इज द पावर ऑफ माइनस 34. दिस इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट एच. हाँ, इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं आ सकती भाई. आई रोड द प्लैंक्स कांस्टेंट रॉन्ग. सॉरी, माय बैड. एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल लो. 6.63 into 10 raised to the power of negative 34 into 3 into 10 raised to the power of 8 divided by 640 into 10 raised to the power of minus 9. The energy of photon comes out to be what? Energy of photon comes out to be 3.1011 कर दो. 11 into 10 raised to the power of negative 11, negative 19. यार एक एक करके आ रहे हो. The energy of one photon comes out to be 3.11 into 10 raised to the power of minus 19 joules. Perfect. अब energy of photon हमारे पास आ गई. We have to calculate how many number of photons are there in a laser beam. We have to calculate how many number of photons are there in a laser beam. What are we going to do? What are we going to do? Very, very easy. If one photon has an energy of what? 3.11 into 10 raised to the power of minus 19 joules. Perfect. How many photons are required to create an energy of 350 into 10 raised to the power of negative 3? Cross multiply it, calculate the answer. 350 into 10 raised to the power of negative 3 divided by answer. The answer comes out to be 1.0.
12 into 10 raised to the power of 18. The answer comes out to be 1.1 into 10 raised to the power of 18. The number of photon comes out to be 1.1 into 10 raised to the power of 18. Simple. The laser beam is incident normally on a surface that absorbs all of the photons. Perfect. Show that the force exerted on the surface by the beam is given by this formula, where P is सर the ये power. आपने ऊपर मल्टीप्लाई पे वन क्यों किया हुआ है? कहाँ की है मल्टीप्लाई का? अच्छा, ये मैंने ये लिखा है कि बेटा एक फोटोन की एनर्जी इज 3.11 इंटू 10 रेज़ टू पावर ऑफ नेगेटिव 19। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स हमें चाहिए नहीं होंगे? सर, ये नहीं, ये लेजर ई लेजर के साथ जो आपने किया 350 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 1, ये क्या है? ये क्या है? ये सवाल पढ़ो। टाइम क्या लिखा हुआ है? टाइम हमारा 1 सेकेंड है, तो इसलिए हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। यू हैव टू ड्राइव दिस फार्मूला, यू हैव टू शो द डेरिवेशन ऑफ दिस फार्मूला। किस तरह इस फार्मूला की डेरिवेशन शो करोगे? यस, हाउ विल यू शो द डेरिवेशन ऑफ दिस फार्मूला? बहुत ही इजी है। यू हैव टू रिमेंबर सम थिंग्स। यू विल से you will say force is equals to what? Force is equals to change in momentum over change in time. Perfect. You know that force is equals to change in momentum over change in time. Perfect. अच्छा, मोमेंटम को आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो? मोमेंटम इज इक्वल्स टू व्हाट? मोमेंटम इज इक्वल्स टू एनर्जी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। और टाइम को आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो? यू कैन रिप्रेजेंट टाइम एज एनर्जी डिवाइडेड बाय पावर। You can say, you can utilize two formulas. You can say that the momentum of a photon is equals to what? Energy divided by the speed of light is equals to momentum. And energy divided by your power is equals to time. Replace both of them here. Force is equals to energy divided by the speed of light. Energy divided by power. Energy cancel out. Power comes to the top. Force is equals to power divided by the speed of light. Simple as that. Let's further move ahead. अच्छा, आप थोड़ा सा गौर से देखना. There are some tricks here that you need to know about. Light of a single wavelength is incident on the surface of different metals. Perfect. The work function energy of the metal is given in table 7.1. Perfect. The work function energies of the metals is given in table 7.1. Perfect. Explain the term threshold wavelength. You have to explain the term threshold wavelength. How do you tell about threshold wavelength? बेटा threshold wavelength क्या होती है? Threshold wavelength is the maximum wavelength of electromagnetic radiation that causes photoelectric effect. You can say threshold wavelength is the maximum wavelength that causes that causes an electron to be emitted, that causes an electron to be emitted from the surface of a metal, that causes an electron to be emitted from the surface of a metal. Perfect. From the surface of a metal. Perfect. Let's further move ahead. For the metals in table 7.1, calculate the value of the largest threshold wavelength. बेटा आपने लार्जेस्ट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है, ठीक है? व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? मिनिमम फ्रीक्वेंसी, या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी लिखोगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए यू विल राइट मैक्सिमम वेवलेंथ। परफेक्ट। अच्छा, नाउ 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 सो व्हाट विल यू से? व्हाट विल यू से? यू विल से यू हैव टू कैलकुलेट द लार्जेस्ट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए वैल्यू। अच्छा, लार्जेस्ट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किस तरह आएगी? थोड़ा सा सोचेंगे, ठीक है? Energy of a photon is equals to hc over lambda naught. Perfect. बेटा अगर आप नोटिस करो, इफ यू नोटिस, एनर्जी इज व्हाट? एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. You need the largest threshold wavelength. So what are you going to do?
You are going to take the smallest energy possible. You are going to take the smallest energy possible. Perfect. So what will you do? The smallest energy possible is 2.26 electron volt. 2.26 into 1.6 into 10 is the power of minus 19 is your energy in terms of electron volts. Perfect. What is H? H is your Planck's constant 6.63 into 10 is the power of negative 34 into the speed of light, that is 3 into 10 is the power of 8. Can you calculate the threshold wavelength? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल सकते हो बेटा, ये 6.63 इंटू 10 इज द पावर ऑफ नेगेटिव 34 इंटू 3 इंटू 10 इज द पावर ऑफ 8 डिवाइडेड बाय योर 2.26 इंटू 1.6 इंटू 10 इज द पावर ऑफ नेगेटिव 19। निकाल लो बेटा, ये आंसर क्या आता है, कैलकुलेटेड। व्हाट डज योर आंसर कम्स आउट टू बी? यस, व्हाट डज योर आंसर कम्स आउट टू बी? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की लार्जेस्ट वैल्यू क्या आती है बेटा? शाबाश, सारे कैलकुलेटर में निकालो। एक दो आंसर मुझे देख रहे हैं। 5.5 इंटू 10 इज द पावर ऑफ नेगेटिव 7, या दैट्स करेक्ट। 5.5 इंटू 10 इज द पावर ऑफ नेगेटिव 7 मीटर्स। सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं भाई। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस। बेटा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस की दो डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? व्हाट विल यू राइट हियर? बाइंडिंग एनर्जी की जब मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको पढ़ाया था, तब आई टोल्ड यू दैट वन डेफिनेशन इज वेरी लव्ड बाय द एग्जामिनेशन। कौन सी डेफिनेशन एग्जामिनर को बहुत पसंद है बाइंडिंग एनर्जी की? द डेफिनेशन विच स्टेट्स दैट बाइंडिंग एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी, इट्स द energy minimum energy required to do what? Minimum energy required to separate the nucleons till infinity. Minimum energy required to separate the nucleons till infinity. Separate the nucleons till infinity. Perfect. This is your binding energy key definition. A nucleus of uranium 235 absorbs a neutron and becomes unstable. It then undergoes a fission reaction. One possible reaction is this। perfect। बेटा एक यूरेनियम का न्यूक्लियस है that absorbs a neutron and becomes unstable. It then undergoes a fission reaction। perfect। One possible reaction is this। ठीक है। Determine the number of neutrons produced in this fission reaction। बेटा अब एग्जामिनर ना आपकी साइकी से बहुत ही ट्रेन हुआ है। He knows what you are thinking. Mostly students think that fission reaction contains or generates three neutrons because they have studied this in IGCSE or O levels. But in A2 level physics, you wouldn't do this. What will you do to calculate the number of neutrons? What will you do to calculate the number of neutrons? You will add the nucleons number on the left hand side, 235 plus 1, and you will add the nucleon numbers on the right hand side, 142 plus 90, plus the number of neutrons is represented by x। perfect। 236 minus 232, the number of neutrons comes out to be 4। number of neutrons is 4। simple। डेटा, क्या सवाल है कोई यार? एक सेकंड भाई, सवाल देख लेते हैं। काइंडली रिप्लाई सर। ये हुसैन क्या हो रहा है तुम्हें भाई? अच्छा, तुम्हें प्रीवियस वाला सवाल ही नहीं समझ आया? वाह भाई। बेटा हमने एएस लेवल में एक बेसिक चीज़ पढ़ी थी, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। इस फॉर्मूला को रीअरेंज किया, बस एनर्जी डिवाइडेड बाय पावर इज इक्वल टू टाइम यहाँ पे प्लेस कर दिया। बेसिक एएस फिजिक्स है यार। चलो, लेट्स सी दिस। डेटा फॉर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर दिस fission reaction are given in the table 8.1। perfect। data for the binding energy per nucleon for the fission reaction are given in table 8.1। perfect। calculate the energy released in mega electron volt for the from the fission reaction of one of the nucleus in uranium 235।
Beta, you have to calculate the energy released in mega electron volts from the fission reaction of one of the nucleus of uranium 235. Acha, how will we calculate the energy released? How will we calculate the energy released from the fission reaction of one of the nucleuses? Hmm. How are we going to do that? Very, very, very easy. बेटा जब भी हमने एनर्जी रिलीज निकालनी होती है whenever we have to calculate the energy release, what do? We take the energies of the product and उसमें से हम reactants की energies minus कर देते हैं. We take the energies of the products and subtract the energy from the reactant. So what are the energies of the product? बेटा प्रोडक्ट की क्या क्या एनर्जीज है? You have uranium, sorry, you have product में क्या xenon and strontium. Xenon has 142 nucleons. And what is the binding energy per nucleon? 8.37. Perfect. So strontium has a binding energy of 8.72. How many nucleons does strontium have? 90. Plus 90 into 8.72. This is the energy of the products. You will subtract the energy of the reactants from it. Uranium is your reactant with a binding energy per nucleon of 7.59. How many nucleons do we have? 235. 235 multiplied by 7.59. Can you calculate the energy released during this reaction? Yes. So 190 mega electron volt is your answer. Simple as that. Let's further move ahead. The isotope xenon 142 is unstable. Okay. Xenon 132 is stable. Suggest a reason why xenon 142 is unstable. You have to suggest a reason why xenon 142 is unstable. Yes. Why is xenon 142 unstable? If you realize xenon 142 has a higher number of neutrons, or you can say xenon 142 has too many neutrons. Xenon 142 has too many neutrons, hence it is unstable. You can say xenon 142 has too many neutrons in the nucleus. In the nucleus, hence it is unstable. Simple. Let's further move ahead. Let's see part 4. Xenon decays into the isotope cesium 142. Perfect. बेटा xenon decay कर रहा है into an isotope of cesium 142. Perfect. A sample initially contains only nuclei of xenon 142. Okay, एक sample है. चलो, what can we do is we can draw a cake. We can draw a cake or an apple pie. Let's draw a cake or an apple pie. ठीक है? No, no, no. These are xenon atoms. These are xenon atoms. Perfect. After 6 seconds, after 6 seconds, the ratio of the decayed number of xenons divided by the undecayed number of xenons is equals to 31. Beta, after 6 seconds, what is happening? The number of decayed xenons divided by the number of undecayed xenons is equals to 31. What does this mean? What does this mean? This means that if the decayed number of xenons are 31, the undecayed are 1. So if I create a pie here, the undecayed, the undecayed number of xenons will get a pi 1. The decayed xenons will get a pi of 31. ठीक है? Calculate the half-life of xenon 142. Show your work. Perfect. You have to calculate the half-life of xenon 142. Which formula are you going to apply? N is equals to n naught E minus lambda t. N is equals to n naught E minus lambda t. Perfect. As lower binding energy लिख सकते हो बट देखो सी लिख सकते हो बट देयर इज अ प्रॉब्लम हेयर. लोअर बाइंडिंग एनर्जी बने नहीं 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 नहीं.
You can say that lower binding energy वाला point is debatable point है. इसको मैं वापस तुम्हें बताता हूँ. Binding energy वाला point is debatable. Let me get back to you. बताता हूँ. I am not sure about this. 50-50 about this. I think इसमें मार्क मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता. चलो let's see this. Okay, so we were talking that xenon के decade number of nucleuses are 31. Undecayed number of nucleuses are 1. Perfect. Calculate the half life of xenon. Show your working. Perfect. So beta, what will be the total of this pie? What will be the total of this pie? The total pieces in this pie are 32. Perfect. The total pieces in this pie are 32. How many are decayed? बेटा कितने डिके हो गए हैं? 31. हाउ मेनी रिमेन अनडिकेड? 1. E minus lambda. What is the time? Time is 6. Simple. So 1 over 32 is equals to E minus 6 lambda. Perfect. Now take ln on both sides. Now take ln on both sides. 1 over 32 is equals to negative 6 lambda. Ln 1 over 32 divided by negative 6 is your lambda. Now you will say, sir, हमारे पास तो lambda आ गया. How will we calculate the half life? Do you remember? Do you remember? Do you remember that lambda is equals to ln2 over the half life? Perfect. So you can equate this here. You can equate this value here. You can calculate the answer. First of all, calculate तो कर लो आंसर को. ln 1 divided by 32 divided by negative 6. Perfect. This is 0.577. This entire fraction is 0.577 is equals to ln2 divided by t half life. Perfect. ln2 divided by this answer will give you a value of what? ln2 divided by this answer 0.577. This gives you a half life of what? This gives you a half life of 1.2 seconds. Simple as that. Nothing complicated. बहुत easy सवाल था ये. चलो let's move ahead. Electrons in a vacuum are accelerated through a potential difference of 80 kilovolts. Perfect. Kilovolts. Okay. The electrons then strike a metal target and X-rays are produced. Perfect. Calculate the minimum wavelength of X-rays that are produced. We have to calculate the minimum wavelength of X-rays that are produced. How are we going to do that? Do we remember one formula? Do we remember one formula? The electric potential energy of the electrons will be equal to what? Will be equal to the energy of the photons. Perfect. Now, what is the formula of electric potential energy? Charge into the voltage. What is the energy of photon? Hc over lambda. Perfect. What is the charge of an electron? 1.6 into 10 raised to the power of minus 19. What is the voltage? 84 into 10 raised to the power of 3. Perfect. What is H? 6.63 into 10 raised to the power of negative 34. What is the value of C? 3 into 10 raised to the power of 8. Can you calculate the lambda? Can you calculate this lambda? Yes. Lambda will be equal to what? Lambda comes out to be what? Can any genius in the chat calculate? Lambda comes out to be 1.5 into 10 raised to the power of negative 15. 1.5 into 10 raised to the power of negative 11 meters is your answer. Perfect. Let's further move ahead. The melting points of two metals are given in table 9.1. Perfect. The melting points of two metals are given in this table. Suggest why the metal target is made from tungsten rather than copper. Now this is a common sense ka question. Now this is a common sense ka question. Why the metal target is made of tungsten rather than copper? So if you see, if you analyze, tungsten has a higher melting point.
Tungsten has a higher melting point. So when kinetic energy gets converted into thermal energy at the metal target, since tungsten has a higher melting point, it does not melt easily. It does not melt easily. आप इसको लिख सकते हो that at the target, at the target, kinetic energy gets converted into thermal energy, gets converted into thermal energy. Perfect. At the target, kinetic energy gets converted into thermal energy. Perfect. Now, since the tungsten metal has a lower boiling point or lower melting point, sorry, lower melting point, sorry, my bad. It has a higher melting point. It does not melt easily. It does not melt easily. Perfect. Let's further move ahead. An X-ray beam is incident normally on a sample of soft tissue and bone as shown in figure 9.1 पे. ठीक है. एक X-ray beam है इंसिडेंट हो रही है on soft tissue and bone. Perfect. Data for the two material is shown in figure 9.1. Okay, so we are given the data for the two material. The soft tissue has a linear attenuation constant of 0.22. Bone has a linear attenuation constant of 3. A specific acoustic impedance of soft tissue is 1.7. A specific acoustic impedance of the bone is 7.8. Perfect. The total thickness of the soft tissue is X. The total thickness of the bone is X. Perfect. The incident intensity of X-ray beam is I naught. The transmitted intensity of X-ray beam is 13% of the incident intensity. Okay, okay, okay. So beta basically क्या हो रहा है? If you write this formula, if you remember this formula of attenuation, I is equals to I naught E minus mu T. Basically जो आपकी transmitted intensity है that is 1.3 of I naught is equals to I naught. What will you do here? Your X-ray is passing through soft tissue of intensity X. Oh, sorry, soft tissue of thickness X and bone of thickness X. So E minus 0.22x. This accounts for what? This accounts for the attenuation in the soft tissue multiplied by E minus 3 into x. This accounts for the attenuation in the bone. What will happen? I naught get cancelled out. I naught and I naught will get cancelled out. Now, since you have two exponents multiplying, what will happen? The powers will get added up. The powers will get added up. 0.13 is equals to exponent minus 3.22x. Perfect. Let's take ln on both sides. Ln 0.13 divided by negative 3.22 is equals to your value of x. What does the value of x comes out to be? Value of x comes out to be 0.63 centimeter. Define a specific acoustic impedance of a medium. What is a specific acoustic impedance of a medium? Product of density of a medium, density of a medium, and speed of ultrasound in that medium, and speed of ultrasound in that medium, ultrasound in that medium. Perfect. Nothing complicated. Let's further move ahead. Use data from table 9.2 to calculate the percentage of the intensity of ultrasound that is transmitted at a boundary between soft tissue and bone. बेटा अगर soft tissue and bone की boundary होगी so how much intensity will be transmitted? Basically we have to calculate what? Intensity reflection coefficient. We have to calculate intensity reflection coefficient.
Z1 is 1.7, Z2 is 7.8. Perfect. What will we do? Z2 minus Z1 whole square divided by Z2 plus Z1 whole square. What is the value of Z2? 7.8. 7.8 minus 1.7 whole square. 7.8 plus 1.7 whole square. This gives you a value of what? This gives you a value of 0.41. As the name suggests, what is this? Beta, what is this? This is your intensity reflection coefficient. Intensity reflection coefficient. Perfect. Now, this tells you what? This tells you the amount that will be reflected. This amount will be reflected. How much will be transmitted? 1 minus 0.41. This comes out to be 0.59. If I convert it into percentages, 0.59 into 100 will be equal to 59%. 0.59 into 100 will be equal to 59%. Simple as that. Let's further move ahead. The ultrasound is now incident on the sample of soft tissue and bone shown in figure 9.1 suggests two reasons why the transmitted intensity through the sample is less than the answer in C part 2. बेटा ये कह रहा है एग्जामिनर that ultrasound is now in a real life incident on a boundary between soft tissue and bone. Why is the transmitted intensity less than 59%? Why is the transmitted intensity less than 59%? So, very, very easy to answer. What will you say? What will you say? If you see, if you see, there are multiple boundaries. There are multiple boundaries of soft tissue and bone. So, obviously, transmitted intensity will be less. This will be the first reason. You will say that there are more than one boundary, so more reflections. More than one boundary. So, more reflections. What will be your second point? What will be your second point? Can you visualize, beta, as ultrasound will travel through matter, it will attenuate. As ultrasound travels through matter, it will attenuate as well. You can write this as well. You can say as ultrasound travels through matter, it attenuates as well. Perfect. Simple. Let's further move ahead. Let's move on to the next one. The sun has a surface. अच्छा किसी का सवाल है. Sir, could you explain the points again? चलो मैं points again समझा देता हूँ यार. No issue. बेटा first point ये है. See what is the examiner asking. The ultrasound is now incident on the sample of soft tissue and bone. State two reasons why the transmitted intensity through the sample is less than the answer in C part 2. So the ultrasound is now incident on the bone and the soft tissue. Why is the transmitted intensity? मैं समझा देता हूँ बेटा समझ नहीं आई attenuation को मैं समझा देता हूँ. Examiner is basically saying that when the ultrasound is now incident on the sample of soft tissue and bone. So now when the ultrasound is incident on the sample of soft tissue and bone, the transmitted intensity, the intensity returning from here is way lesser. The intensity returning from here is way lesser than you have calculated in 59%. What could be the reasons? First of all, the transmitted intensity that we have calculated is for one boundary. First of all, the transmitted intensity we have calculated is for one boundary of bone and soft tissue. However, in this scenario, you have this boundary as well and this boundary as well. So there are two boundaries of bone and soft tissue.
Secondly, beta, as ultrasound travels through matter, it will also attenuate. बेटा हमने अल्ट्रासाउंड की एटेनुएशन पढ़ी थी. अगर अल्ट्रासाउंड यहाँ पे आई नॉट एमिट हो रहा है तो इट्स इंटेंसिटी decreases as you travel through the matter. So that will also decrease the transmitted intensity. Now do you guys get the 2 points? उमर हुसैन बेटा समझ आ गई है. दोनों पॉइंट्स की समझ आ गई. आगे बढ़े. लेट्स मूव अहेड. चलो. Now let's see this. The sun has a surface temperature of this. Luminosity of sun is this. You have to calculate the radius of the sun. Which formula are you going to apply? Yes, luminosity is equals to what? Luminosity is equals to 4 pi Stephen Boltzmann constant into r square temperature power 4. What is luminosity? 3.85 into 10 is the power of 26. This is 4 pi. What is Stephen Boltzmann constant? 5.67 into 10 is the power of minus 8. Perfect. What is the value of radius? We don't know that. What is the value of temperature? 5780 power 4. Can you calculate the value of radius? Can you calculate the value of radius? 6.96 into 10 is the power of 8. 6.96 into 10 is the power of 8 meters is your value of radius. Perfect. The Earth is at a distance of 1.5 into 10 is the power of 11 meters from the Sun. Calculate the radiant flux intensity of the radiation from the Sun at a distance of this. Perfect. You have to calculate F. F is equals to what? L divided by 4 pi d square. What is the value of luminosity? 3.85 into 10 is the power of 26. 3.85 into 10 is the power of 26. Perfect. What is D? What is D? 1.5 into 10 is the power of 11 whole square. This comes out to be what? This comes out to be what? This comes out to be 1.36 into 10 raised to the power of 3. This comes out to be 1.36 into 10 raised to the power of 3. What is the unit of radiant flux intensity? A volt meter minus 2. A volt, sorry, volt. The variation with wavelength of the intensity of radiation emitted from the sun is shown in figure 10.1. Perfect. Intensity versus wavelength graph is shown here. Perfect. Now what do we have to answer? बेटा हमने आंसर क्या करना है? Let's see. Let's see what do we have to answer. Another star has the same radius as the sun, but a lower surface temperature. Perfect. On figure 10.1, sketch a line to show the variation with wavelength of the intensity of the radiation star. Radiation emitted for this star. Perfect बेटा थोड़ा सा गौर कर लो जिंदगी आसान. Now another star has a lower surface temperature. Another star has a lower surface temperature. What do I mean by that? Lower surface temperature होगा बेटा तो क्या होगा? If I write the formula 4 pi r square T4, can you see all of these are constant and radius भी same है तो ये भी constant हो गया. Hence luminosity will be directly proportional to temperature power 4. If temperature is lesser, that means the luminosity of the star will be lesser. बेटा ये जो second star है उसकी luminosity will be lesser. Perfect. Secondly, do you remember this formula? Maximum wavelength is inversely proportional to 1 over temperature. Perfect. So, what will happen? If you have a lower surface temperature, your wavelength at which the maximum intensity occurs will be greater. So, your graph will look somewhat like this. Somewhat like this. इस तरह का graph you will draw where you will have a lower intensity and the maximum intensity will occur at a greater wavelength. Perfect. Let's further move ahead. A galaxy in the constellation CB is moving from the Earth. Perfect. The visible Sir, emission spectra for the sun is shown. Perfect. sir, This is the visible emission spectrum for the sun. Perfect. The lines are at the wavelength of 397, 410, 434, 486, and 656.
The composition of the sun and a star in the core CB galaxy are same. Perfect. On figure 10.3, sketch the emission spectrum for the star in CB galaxy as observed from Earth. No calculations are required. Beta, you have to sketch the variation of wavelength of the CB galaxy. How will you do that? Can you see the galaxy is moving away from Earth? I have taken the first initials of this galaxy CB. Now, if you see this galaxy is moving away from us. If you see this galaxy is moving away from us. If a galaxy is moving away from us, what happens to the wavelength? The wavelength increases. All the wavelengths will shift to the right. Like this, like this, like this, and maybe like this. All the wavelengths shift to the right. Perfect. Let's further move ahead. The galaxy in CB is moving from away from the Earth at a speed of this. This is the speed of recession, that is v. Perfect. Use the information from B1 to calculate in nanometers the observed wavelength of the lowest visible energy emission. You have to calculate the wavelength of the lowest energy emission. So if I want to calculate the lowest energy emission, I will take the highest wavelength. What is the highest wavelength? 656. Which formula am I going to apply? Change in lambda over lambda is equals to the speed of recession divided by the speed of light. Can I calculate the change in lambda? Yeah, very, very easy. What is the speed of recession? 21,400 into 10 raised to the power of 3 divided by the speed of light, that is 3 into 10 raised to the power of 8, into the wavelength, that is 656 nanometer. This comes out to be 10 nanometer as your answer. Change in lambda is 46.8. My bad. 46.8 nanometer. Change in lambda is 46.8 nanometer. Perfect. If your change in lambda is this, what will be your actual wavelength? If your change in lambda is this, what will be your actual wavelength? Wavelength is equals to change in lambda plus 656. Wavelength is equals to change in lambda plus 656. 46.8 plus 656 is equals to what? बेटा total wavelength क्या हो जाएगी? 703 nanometer. 703 nanometer. Perfect. The wavelength in B part 2 सर is प्लस used to 656 calculate क्यों a किया है? value for the surface temperature. एक सेकंड यार, कोई बोल रहा है बेटा, चार्ट में लिख दो, ऑडियो का थोड़ा सा इशू हो गया है. चार्ट में लिख दो, आई कुडंट हेयर यू बट आई कैन सी यू स्पीक. चार्ट में लिख दो, मैं आंसर कर देता हूँ. सॉरी फॉर दैट यार. The wavelength in B part 2 is used to calculate a value for the surface temperature of the star in the CB galaxy. The calculation does not give an accurate value. एक सेकेंड बेटा, +656 इसलिए किया है, देखो इस फॉर्मूला से. व्हाट डू यू नो? इस फॉर्मूला से आप जो चेंज इन लैंडा निकाले हो, व्हाट डज दैट टेल यू? What does that tell you? This tells you the amount of wavelength that will increase if the galaxy is moving away from you. This formula basically tells you the amount of wavelength that will increase if the galaxy is moving away from you. Now, now, you can add the wavelength together to calculate the final wavelength that you will observe on the earth. बेटा ये वो wavelength है जो आप earth पे observe करोगे. Perfect. Now, if you will observe this wavelength on the earth and you calculate the surface temperature using this wavelength, what will happen? Do you remember wavelength maximum is inversely proportional to temperature? If your wavelength is greater, what will happen to the surface temperature value? It will be too low. The surface temperature value will be too low. What can you say here?
You can say peak wavelength. Peak wavelength is high, or you can say greater, hence temperature will be less, or too low, you can say that. Is this clear? बेटा कोई और सवाल? You can ask in the chat. This marks the end of the paper and the end of today's class as well.